So let's start the session. I'm sure that all of you teachers would have had a very interesting session yesterday with Miss Maya Menon regarding life skills. And just a part of life skills is something that is 21st century skills. So the team, can I have the PowerPoint presentation shared? So as we all know that this is a very buzzword. 21st century skills is something we hear almost every day in the curriculum documents, in the policy documents, say in the teacher training modules, school development plan, school improvement plan. What is this word? What does it actually mean? Is it something radically new? Or is it just a rebranding of some age-old competencies that we have come across with just a little bit of modern twist? So let's today together unpack this buzzword 21st century skills. Yeah, Ms. Debashri, can I have the uh, PowerPoint shared here, please? Sure, ma'am. So even as we unpack this word, just before, I think around 10 minutes back before 5, we saw how how we all entered this platform. And we actually went virtually through some kind of, train across the streets in some beautiful, what do you say, natural garden. I hope all of you noticed that. And with a beautiful music taking us around, some kind of world, a completely different world. They were communicating something. The teacher app team itself was communicating something to the train. If you had observed each bogies of the train, speaking something to us and using their creativity, they were actually taking us through these all life skills and the 21st century skills. So let's just unpack these skills with the kind of certain examples, and as teachers, what would we do as educators to make it possible to bring 21st century skills to students. At the next slide, please. So at the very heart of 21st century skills are 4 C's. I'm sure you must have heard of these 4 C's, and this is not something completely unfamiliar to us. This is something we use every day, right? Critical thinking, creativity, communication, collaboration. These are the 4 C's for the 21st learning skills. And this is something which we use regularly in the classrooms. We communicate, we teach student creativity, we teach with creativity, we try to inculcate critical thinking in learners, and we always see that there are group projects, collaborations, and so on. Next slide, please. But as we move, as you can see, there's a clock. And as we move over time and we have passed, a lot of time, there are many more skills that have gained predominance. Next slide, please. So as we see, what are the skills? Just try to think through what are those kind of skills that today are very predominant other than these 4 C's. Can I have the slide, please? Yeah. So digital literacy, very important, especially after the COVID. We know that how important is digital literacy with online classrooms, online platforms, in our everyday life. Next. Global citizenship. I'm sure that we are not just local, we are not just local. Now we have to collaborate with partners beyond our country. That is global citizenship. Uh, if we have to keep up with the times, we need to be a global citizen. Next. Emotional intelligence. I'm sure mental health, well-being is a very, very grave situation today. Be it teachers, be it students, or be it any individual for that matter, burnout, emotional problems, depression, anxiety, all these things have, accelerated to a great extent. Emotional intelligence is something very, very important for every stakeholder in education. Next.
Adaptability. Flexibility and adaptability is something that we just cannot miss. We need to be adaptable as learners come year after year. We need to adapt our situations, adapt our way of teaching, adapt our lesson plans, adapt a way of dealing with students. So adaptability is again something that is a very hardcore skill that is necessary today. And next, entrepreneurial mindset. Yes, entrepreneurial mindset is again another important skill where each one is a leader. Each one leads at something. Each one initiates something. So that's also equally important. These are few of the skills that I have listed, and there may be many more that you may come across, and you can definitely, share those in the Q&A session. But yeah, these are the few skills that I felt are very important other than the 4 Cs. Next. So now let me tell you a story. Yeah. So as you can see here, there are two people. This is a coffee shop conundrum where there is something going on in the coffee shop. If you can see the first left side of the picture, there is one fellow talking to someone saying, "Hello, sir, the machine broke down, waiting for your instructions." Either he is talking to someone, a superior, or he is talking on the phone, right? And the guy near him, he's also working in the shop. He's working on some gadgets, maybe a laptop or an iPad or whatever. And he's just found something and he says, "Got it. Let me try this." So what do you think both would have been doing? Actually, in the coffee shop, a machinery broke down. After the machinery broke down, these are the excerpts of these people that I have put down here. Just rack your brains and think what would exactly have been happening. What the person one is doing and what the second person is doing. Right now look at the second half of the picture. The first person is congratulating the second person for something. We don't know. Let's see what. And the second person is thanking him for the congratulations. Right? So let's see what is exactly happening. What kind of skills are being implemented and adopted in this particular situation itself? Just a coffee shop conundrum. Right? Next slide. So as you see, the machinery had broken down. There were two employees. One of them adapted, one of them waited. That is, the first one was waiting for the instructions from their senior or the superior or the manager as to what to do next. The second one just took up a device, found out how he can solve it, and just adapted. So what happened? Promotion followed the problem solver. He could solve the problem immediately. So this is the real world value of adaptability. It is not just about classrooms. It is not just about students. It is not just about learners. How are we preparing the learners not just survive, but to do with what to do and what they know, what to do with what they know about, right? So real world adaptability, solve problems independently. If no one is there, how can one solve the problem, right? How can I do certain things of my own and communicate quickly? So these are the things, these are the skills that the second person showed. He was a problem solver. So things did not stop and the coffee shop just resumed as the earlier without even though the machinery broke down. Next slide. So why do these skills matter, right? As you see, the changing landscape of work, the world of work is changing. What is being demanded? What are the expectations of the industry? What are the expectations of the workplace? Every day it's changing. How are we preparing our learners to be smart enough to adapt to that workplace? Next. Next. Yes. So information overload. As we know that there's a lot of information available. Now, there's no need for teachers to give information to children. There's no need of books. At the click of a mouse or at the click of a button on the phone,
students can get loads of information. Now, it's not just about gaining that information. It's not just about rote memorization. It is about how to use that information, how to adapt that information, how to sift that information, right? So how that is why these skills matter. Next. Next, please. Yeah. Global interconnectedness. So as you see, now you're all teachers from various parts of the country. I am from Mumbai and I'm sure you're from various parts, various cities. We are sitting together and listening to something and interacting with each other. How is it possible? Technology, how to use technology, how to make it interesting, how to communicate. So global interconnectedness. Now, this is just a small sample. How can you as teachers collaborate with teachers from other countries? How can you do projects with teachers from other countries? How can you find out solutions for problems to our context by collaborating with teachers from other countries? So global contactness matters. And then as you see the last one, navigating the complexities of workplace with changing times. We saw, right? How do we navigate these spaces? It's not as easy. So teachers also need these skills and teachers need to inculcate these skills in their students. How do we do it? Next slide. Next slide, please. Right. So now one more example. Here in the left, you can see a taxi. Right, you can see an Uber. Both have drivers. Both are drivers. A taxi driver versus an Uber driver. Is there a difference? Do you think so? Once upon a time when there was no Uber, no Ola, it was just taxi. What we used to do, we used to tell the taxi driver the place, we used to sit and we used to move, right? So the driver was a very skilled and efficient driver. But now, an Uber driver, what is it that an Uber driver needs beyond driving? Let's see that. Next slide. Is it just driving efficiently or is it much more beyond driving? What is it that Uber driver needs? Technology. Next slide, please. Communication, people management, different kinds of people sitting, giving the OTP. Some do not know how to use the phone. Some do not know how to use the app. Some do not know where is the OTP. Some people may, delay. So conflict resolution. So how to manage people, how to deal with people, how to talk with people. The moment you talk, you do not talk cordially with people, what happens? You get a review. You may get a rating, right? So all these are the skills. It's not just about driving, human skills. So the driver of an Uber or an Ola needs much more than driving. It's a human skills, people management, conflict resolution. So all these 21st century skills are something that traditional roles even require today. Next slide. Yeah. Ma'am, we are just getting requests from teachers if the same can be explained in Hindi as well. So, You told me, yes. I'm yeah. so used to this thing. Okay. Yeah. Yeah. So let me try. I'm not a फ्लुएंट इन हिंदी हिंदी इतनी अच्छी तरह से नहीं आती है ओके आई एम फ्रॉम मुंबई तो मेरी हिंदी थोड़ी टूटी फूटी होगी तो प्लीज माफ कीजिए कि अगर मेरी हिंदी अच्छी नहीं है बट देन हाँ मैं संक्षेप में इतना बताना चाहूंगी कि अभी तक जो हम देख रहे थे काफी सारे ऐसे स्किल्स कौशल्यता राइट कौशल्यता जो है हमने देखे हैं कि हमें किसी से बात करना है तो किस तरह से बात करना है तमीज से बात करना है राइट और लोगों से मिलना है तो किस तरह से मिलना है टेक्नोलॉजी यूज करना है तो हमें क्या क्या व्हाट यू से कॉम्पिटेंसीज की जरूरत है सी ऑल दीज थिंग्स पहले से हमको पता है लेकिन ये जो 21st सेंचुरी स्किल्स है जो 4 C's के बारे में बताते हैं हम किस तरह से क्रिएटिव हो सकते हैं राइट सृजनता हाँ हम किस तरह से किसी से कोलैबोरेट कर सकते हैं साथ में अगर किसी से काम करना आपके कलीग्स आपके जो साथ काम करते हैं उनके साथ मिलके आप लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं आपके साथ उनके साथ मिलके काम दोनों के विचार अलग होंगे तो अगर एक
इसमें आना है तो आप कैसे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, किसी के साथ आप तालमेल मिला के साथ जा सकते हैं। तो ये जो सब स्किल्स है आज की बहुत जरूरत है, राइट। आज के जमाने में स्पेशली जब कोविड आ गया है, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है, लोगों का मानसिक संतुलन भी काफी कुछ प्रॉब्लम में है। स्टूडेंट्स को इतना एंजाइटी है कि कैसे पढूं, इतना सब कैसे एक साथ लूं, ऑल दीज थिंग्स, इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इंफॉर्मेशन को हम किस तरह से बच्चों को ये किया जाए कि बाय हार्ट करने से ज्यादा उस इंफॉर्मेशन को कहाँ लाइफ में उपयोग किया जाए, राइट। तो ये सब जो स्किल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है आज की 21st सेंचुरी के लिए। तो उसी की हम बात कर रहे हैं। रोज हम सुनते आते हैं, लेकिन ये है क्या, ये हम देख रहे हैं। और इसके कुछ मिथ्स और फैक्ट्स है, कुछ सच है और कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो हम सोचते हैं कि है पर एक्चुअली नहीं है। तो आई थिंक द टीम हैज अ पोल राइट हियर, एम आई राइट? Yes, ma'am. Let me just हाँ। तो ये एक अभी आपके पास, आपके सामने एक पोल करेंगे जहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है। जिस स्टेटमेंट्स को आपको कहना है कि ये सही है कि ये सिर्फ एक क्या भ्रम है, राइट। मिथ इज अ भ्रम, आई थिंक, आई डोंट नो, आई एम वेरी सॉरी फॉर यूजिंग द रॉन्ग वर्ड्स मे बी, बट देन यस, क्या ये सही है या फिर ये सिर्फ एक सोच है हमारी। तो ओनली एलिट स्कूल्स कैन डू दिस, मतलब ये सिर्फ अर्बन स्कूल में, सीबीएसई स्कूल्स में, या फिर देखा जाए तो आईबी स्कूल्स में, ऐसे ही स्कूल्स में ये जरूरत है क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, इतना सफिस्टिकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। बाकी सब जगह इसकी जरूरत नहीं है। मतलब गांव में क्या जरूरत है, गांव में तो सब कुछ ये है। तो फिर आप क्या सोचते हो इसके बारे में? आपको यहाँ पे टिक करना है कि ये मिथ है या रियलिटी है, ताकि हमें पता चले कितने लोग इसको मिथ समझते हैं, कितने लोग ये सच समझते हैं। The team can take a call when to move to the next, depending on the responses. Okay, so almost 72% of, मतलब 72% के लोगों ने यहाँ पे ये कहा है कि नहीं, ये मिथ है, ये सिर्फ हमारी सोच है। सच ये अलग हो सकता है कि नॉट ओनली एलिट स्कूल्स लेकिन हर जगह पे इसकी जरूरत है, राइट। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट? अब आपके सामने एक दूसरा स्टेटमेंट आएगा। ओके, ऑल लर्नर्स नीड दिस स्किल्स। अगेन, इज इट जरूरी है क्या, हर किसी को जरूरत है? Should each and every one of us have these 21st century skills? I'm a I'm a very big CEO of a company. मैं इतना, मतलब बहुत बड़ी पोजीशन में पहुंच चुकी हूँ या पहुंच चुका हूँ। आई एम एट अ वेरी बिग पोजीशन, आई डोंट नीड एनी ऑफ दिस थिंग्स। व्हाट डू यू थिंक? ओके, तो 90% यहाँ पे ये
कह रहे हैं कि नहीं, सभी को जरूरत है ये स्किल की। यस, एब्सोल्युटली। चाहे वो कितने भी बड़े पोजीशन में हो, चाहे वो खुद के लिए काम कर रहे हो, बट ईच वन ऑफ अस नीड दी स्किल्स। बात करना तो सबके साथ है, राइट? कोलैबोरेट करना तो सबको है। ऑफ कोर्स वी डू नीड द स्किल्स। एक्स्ट्रा स्किल्स नीड टू बी टॉट, मतलब इसको सिलेबस खत्म करने के बाद सिखाया जा सकता है या सिखाया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या ये सही है या फिर मिथ है? Seems some of them are not able to see the poll. Yes. That's okay. This could be due to internet issue at your place. अगर आपको पोल नहीं दिख रहा है and you're able to follow मैम्स इंस्ट्रक्शन, तो आप चैट सेक्शन पे इसके रिस्पॉन्स दे सकते हैं. We can see रिस्पॉन्स, बिकॉज रिस्पॉन्स मिथ या रियलिटी है. तो क्वेश्चन जिस तरीके से है कि क्या 21st सेंचुरी स्किल्स एज एक्स्ट्रा स्किल्स सिखाए जा सकते हैं, आप उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं ये मिथ है या ये रियलिटी है. Okay, fantastic. Now this answer is something very expected, unexpected. Okay, शायद आप आपकी ये समझ है कि ये स्किल सिखाना जरूरी है, इट नीड्स टू बी टॉट। बट ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है, इनफैक्ट द स्टेटमेंट इज नॉट कम आउट प्रॉपरली, दिस स्किल्स नीड टू बी टॉट एज एन एक्स्ट्रा स्किल आफ्टर फिनिशिंग द सिलेबस। मतलब हम पूरे सिलेबस खत्म करें, सब कुछ, मतलब जो पढ़ाई है, साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, लैंग्वेज, सब पढ़ाने के बाद फिर हम लाइफ स्किल्स का एक पूरा व्हाट यू से, यू टेक अ होल पीरियड ऑफ लाइफ स्किल्स जिसमें हम 21st सेंचुरी स्किल्स अलग से पढ़ाते हैं, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। दीज स्किल्स नीड टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द करिकुलम। आप समझ रहे हैं ये क्या है एग्जैक्टली ये जो स्किल्स है? जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको टाइम टेबल में अलग से पीरियड रखा जाए, ना कि आपको, अगर साइंस टीचर है, लैंग्वेज टीचर है, हिस्ट्री टीचर है, कोई भी टीचर है, अपने ही क्लास में जब आप हिस्ट्री सिखाते हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं, इन स्किल्स को इनकलकेट करना जरूरी है। तब जाके ये स्किल्स इंटरनलाइज होंगे। ओनली देन, if you are trying to inculcate, we will see later, we will see one example from a subject as how do we integrate these skills within the subject. सब्जेक्ट के दौरान ही हम कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट? नेक्स्ट, आई थिंक द लास्ट वन. Okay, this came as a breakup embedded in pedagogy, so you can move to the next. This is the one which was connected with the previous one. Can you move to the next? Yeah. Yeah. टेक किसको? सिर्फ टेक सेवी टीचर्स इसको सिखा सकते हैं। टेक, जो टेक्नोलॉजी में एकदम निपुण है, वही ये 21st सेंचुरी स्किल सिखा सकते हैं। ओनली दे कैन टीच। व्हाट डू यू थिंक? क्या ये सही है या सिर्फ हमारी सोच है? मतलब टेक्नोलॉजी जो जानते हैं, जो टीचर्स टेक्नोलॉजी जानते हैं, या फिर सिर्फ टीचर्स नहीं, कोई भी जो टेक्नोलॉजी जानता है, वो ये 21st सेंचुरी स्किल्स लर्नर्स को सिखा सकते हैं। ग्रेट। सो स्टिल इज 66%। तो टेक्नोलॉजी सिर्फ एक हथियार है, इट्स अ टूल, इट इज नॉट अ स्किल।
ये कोई भी टीचर, साइंस टीचर जो बहुत साल से एक्सपीरियंस्ड है और टेक्नोलॉजी नहीं जानते, वो भी ये स्किल सिखा सकते हैं। क्रिएटिविटी हो, कोलैबोरेशन हो, कम्युनिकेशन हो। हाँ, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो ज्यादा आसान होता है सिखाने, एंड इट बिकम्स रियली मोर easier, faster, and easy for the learners to understand, especially of this age. So, technology is just a tool, it is not a skill. Okay, so we close this and go back to our presentation now. So, now if you see, what are the things that we can make in the classroom happen? Exact, how can we integrate? जैसे जैसे आप लोगों ने कहा है ये myth और reality about 21st century skills, that how it can be embedded in the curriculum. It is not something that is only relevant for elite schools or just the schools in the urban area, but it is very, very relevant for even students from rural who want to communicate, who want to do some collaboration, who want to do some research, and so on, right? It's also something that not technology is just important, but it is any teacher with these kind of skills can integrate these skills within the curriculum. So let's take an example. कैसे कर सकते हैं? साइंस की एक लेसन लिया है मैंने अभी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट, फॉर ग्रेड 8। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है इस लेसन में, जहाँ जहाँ की हम 21st सेंचुरी स्किल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Did we miss a few slides? I think the previous. Okay, is not an issue. Okay, move to the next slide. Something wrong, I think. Okay, maybe it's coming later. Yeah. So next slide. Yeah. So इस लेसन में टीचर क्या कर सकते हैं? एक डिजिटल इमेज, अगर डिजिटल है, डिजिटल इमेज कर सकते हैं, या फिर यू कैन टेक अ पेरिस्कोप, राइट? पेरिस्कोप अगर अवेलेबल है जहाँ पे टेक्नोलॉजी की नहीं है फैसिलिटी, तो यू कैन टेक अ पेरिस्कोप और अ व्हीकल रिफ्लेक्टर। सो एक डिजिटल इमेज यू कैन डिस्प्ले, जहाँ पे आपके पास आईएफपी पैनल हो या स्मार्ट बोर्ड्स हो, तो यू कैन शो अ पेरिस्कोप और व्हीकल रिफ्लेक्टर और सोलर कुकर और एनीथिंग यू कैन टेक, एंड देन यू कैन पोस्ट क्वेश्चंस कि व्हाट आर द थिंग्स, ऐसा क्या है इन सब में, समान क्या है, what are the similarities in this, right? And then you can have like ask them to list down the similarities as to what is happening in that particular periscope ka agar if they are given in their hands, and they can actually, what do you say, reflect on those questions, like say what do they have in common, how do they think, like how is it working, basically light को डाल के how it is working, then they can reflect on this, and then they can use FET simulation. I don't know how many of you know about FET simulation. These are certain applications. There are various technological applications, काफी सारे available है, science में भी, language में भी, history में भी, geography, any subject you take, economics, there are various apps now available. So you need to be familiar with those kind of apps, right? So if in this particular example, you can use FET simulation or any other app to demonstrate. अभी एक बार आपने क्वेश्चन कर दिए, उनको सोच में डाल दिया, सी दे मे नॉट बी एबल टू आंसर, सही या गलत जवाब, सही या गलत हो उसका हम प्रॉब्लम नहीं है, हमको ये है कि वो सोचने लगे, लेट देम स्टार्ट थिंकिंग। फिर आपने ये सिमुलेशन दिखा के, नाउ यू विल शो देम हाउ रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ मिरर, right, using the FET simulation, and then you will explain कि you will explain to them कौन सा रे है, which is the normal ray, which is the angle of incidence, which is the reflected ray, whatever, जो भी concepts reflections के साथ जुड़े हुए हैं, उस सबको हम explain करेंगे using this app. It becomes easier for students. It's not only easier, it becomes interesting. Students का attention ज्यादा retain होता है। अगर आप सिर्फ मौखिक वोकल सिखाएंगे तो प्रॉबेबली स्टूडेंट्स में नॉट पे अटेंशन, इसमें ज्यादा स्टूडेंट्स अटेंशन पे करेंगे जबकि आप कोई ऐप यूज करेंगे, और पुट देम इन ग्रुप्स टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर ऐप। उनको ग्रुप में डालिए, उनको पैर में डालिए, 3 जन में डालिए, एंड देन लेट देम वर्क, टेक देम टू द कंप्यूटर लैब, ओपन द FET सिमुलेशन फॉर देम, लेट देम नाउ वर्क ऑन इट। खुद से
पता करेंगे कि लाइट क्या हो रहा है, एंड देन यू नीड टू फैसिलिटेट एज अ टीचर। आप घूमेंगे पूरे इसमें उनको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या हो रहा है, हाउ इज लाइट रिफ्लेक्टिंग, व्हाट इज द इंसिडेंट रे, व्हाट इज द रे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सो ऑन। ओके, फिर वो अपने, यू कैन यूज अगर क्लास, व्हाट इज दैट, क्लासरूम मार्कर्स, यू कैन यूज गूगल डॉक्स, कोई भी एप्लीकेशन आप स्टूडेंट्स को दे सकते हैं जहाँ पे वो लोग लिस्ट डाउन करते हैं देयर ऑब्जर्वेशंस। उन्होंने काम किया फिर सिमुलेशन पे, अभी वो ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। नाउ आफ्टर दिस, नाउ यू डिवाइड देम इन ग्रुप्स। अब ग्रुप में उनको कहिए कि एक रिफ्लेक्टिव टूल बनाएं। नॉट नेसेसरी, ये तो सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। हर इसमें हो नहीं सकता कि कुछ बनाए, हो सकता है कुछ पोर्टफोलियो बनाए, लैंग्वेज में कुछ उन्होंने पोयम लिखा, राइट, और उन्होंने कोई स्टोरी बनाया, राइट, हिस्ट्री में उन्होंने कुछ केस बनाया, राइट, एनीथिंग, इट कैन बी नरेशन ऑफ ए हिस्टोरिक इंसिडेंट, एनीथिंग इट कैन बी, नॉट नेसेसरी कि कुछ हाथ में लिए जैसे साइंस में हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव टूल बनाए, राइट, इट कैन बी एनीथिंग इन एनी सब्जेक्ट्स। तो बनाने के टाइम वो एक दूसरे से बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, फिर कुछ नया सोच लाएंगे, राइट, कि किस तरह से बनाए। शायद किसी के साथ सहमत नहीं होंगे तो दे विल ट्राई टू फाइंड आउट वेज ऑफ कन्विंसिंग देम, राइट, कि अगर दो तीन जन में कई बार ऐसे होते हैं कि एक एक इंडिविजुअल कुछ बता रहे हैं, दूसरे उससे सहमत नहीं है, तो या तो फिर वो सहमत वाले उसके साथ उसको बताते हैं कि कैसे ये करना है और सहमति कराते हैं, दे ट्राई टू कन्विंस एंड दे कम टू अ कॉमन कंसेंसस। तो इस तरह से वो काफी सारे उनके स्किल्स इसमें डेवलप होते हैं। और फिर गैलरी वर्क, फिर अपने रिफ्लेक्शन टूल एग्जीबिशन जैसे वो करते हैं, और हर स्टूडेंट दूसरे का देख के पीयर क्रिटिक देते हैं कि ये इस तरह से बनाया जा सकता है। तो एनालिटिकल स्किल्स कि ये मैं बनाता तो इस तरह से बनाता तो शायद अच्छी तरह से होता, वगैरह वगैरह, एंड देन दे रिफ्लेक्ट एंड शेयर इट विद द होल ग्रुप। तो इसमें देखिए क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, डिजिटल लिटरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कितने सारे स्किल्स आप एक ही क्लास में आप पूरा समावेश कर सकते हैं, राइट। यू कैन इनकलकेट ऑल these skills through one classroom itself, one concept itself. That is what integrating the skills in the teaching itself, and not teaching separately after finishing the syllabus. Next slide, please. और यस, तो हाउ कैन इट मेक इट हैपन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ऐसे नहीं कि व्हाट क्वेश्चंस, व्हाट क्वेश्चंस होते हैं, बट व्हाट के साथ हाउ ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं जिसमें ओपन एंडेड आंसर्स होते हैं, जो अपने पर्सपेक्टिव्स, अपनी सोच वो बता सकते हैं। ऑथेंटिक टास्क, ऐसे टास्क देंगे जो वो खुद हम अपने कम्युनिटी में अपने घर में जाके कर सकते हैं, लाइक से वाटर कंजर्वेशन या फिर वेस्ट मैनेजमेंट। वो घर घर में जाके पूछते हैं कि कैसे क्या कचरा किस तरह से इकट्ठा करते हैं, वगैरह वगैरह। ये ऑथेंटिक टास्क होते हैं जिसमें उनको मजा आता है, जो एक्चुअल फील्ड में जाके करते हैं, और फिर उनको इंटरेस्ट की वजह से आके दे लर्न फ्रॉम ईच अदर, राइट। यू कैन क्रिएट दिस टास्क वेरी इजीली एंड इट बिकम वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स, और इसमें काफी कुछ सीखते हैं, बोलना, किसी के साथ कर्टसी से बात करना, एंड सो ऑन। प्रमोट रिफ्लेक्शन, फिर क्या, जब भी कोई टास्क करते हैं, क्या अच्छा गया, जरूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हो, जरूरी नहीं है कि एवरीथिंग इज अ सक्सेस, एवरीथिंग इज गुड, देयर कैन बी बैड थिंग्स। आप सिखाते हैं तब भी होता है ना कि कई बार हम गलती कर बैठते हैं, तो गलती करना कोई गुनाह नहीं है, गलती से सीखते हैं। सो व्हाट हैपेंड, व्हाट कुड हैव हैपेंड बेटर, व्हाई डिड नॉट हैपन ए सर्टेन वे, ऐसे वगैरह क्वेश्चन से उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। सो रिफ्लेक्शंस आर इंपॉर्टेंट बोथ फॉर educators as well as students, and student choice and was, जरूरी नहीं है कि हर कोई लिख के बताए, उनको बोलने का मौका दीजिए कि वो किस तरह से उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। ड्राइंग करके प्रेजेंट करना चाहते हैं, ऑडियो निकाल के प्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर ऑथेंटिक टास्क दिया तो उन्होंने ऑडियो एक्सर्प्ट लेके आए सबके और फिर वो प्ले किया, राइट, और फिर किसी ने कोलाज बनाया या फिर किसी ने लिखा। See, it depends on their choice and their own voices. So, all these things will try to inculcate 21st century skills. Next. Ma'am, over here, I'll just want to
inform the users that I'm sure if you're doing any 21st century skills, by the end of the session, you can share it with ma'am and then ma'am can give her inputs. So you can think of such activities, and when the webinar, when the presentation stops, we can give you a chance to unmute yourself and then you can share your experience with ma'am. So keep that in mind while we proceed with the remaining slides. Yeah, that's most welcome. That will be really. Next slide, please. Yeah. So it's not just only confined to teaching. Assessment भी ऐसे कर सकते हैं आप. Next slide, please. So assessment में भी किस तरह से assessment देंगे. कई बार ऐसे बच्चे होते हैं क्लास में जो चुपचाप बैठे रहते हैं, जो डर डर के बैठे रहते हैं, जो डरते हैं कि मैं कुछ बोलूं तो लोग हंसेंगे, मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, right? So can you move to the next slide? So you can give different kinds of assessment where role play, yes, role play, podcast. तो ऐसे एक एग्जाम्पल है जहाँ पे ट्रेडिशनल असेसमेंट से टीचर ने चेंज किया पॉडकास्ट में. तो हाउ ब्यूटिफुली एंड क्रिएटिवली अ स्टूडेंट एक्चुअली केम अप विद द होल आर्टिफैक्ट ऑफ पॉडकास्ट, गोइंग, giving the voice and beautifully explaining the concept itself, right? So that's another way of assessment. So there are so many ways of assessments where you can actually uh, give the student the choice of assessment, the format basically. So you can have differential kind of assessment. This has inclusivity in the classroom. Your classroom will be included. हर कोई बच्चा included लगेगा, right? One, if you have heard of universal design learning, UDL, all the principles of UDL will be encompassed in these kinds of teaching learning tasks as well as assessment tasks. Like mode of representation है, कैसे represent करें, कोई drawing से, कोई मौखिक बोले, कोई अपना वीडियो निकाले, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग से, एनीथिंग, कोई राइटिंग से, राइट? डिफरेंट मोड्स ऑफ एंगेजमेंट. क्लास में जब आप फेट सिमुलेशन पे कर रहे हैं तो वो लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो दे आर एंगेज्ड. Then when you're putting them in group activity, design करने बोल रहे हैं, another kind of engagement. So different modes of engagement. And when you are giving them assessment, different format, they are able to express different kinds of expressions. So UDL के हर principle is kind of what do you say, differential teaching learning assessments में included होते हैं. So inclusive classrooms, UDL, all these principles are included. Next slide. Next slide, please. Yeah. So role of now again. अब यहाँ तक हमने सब देख लिया. तो what is our role as educators? Educators होने के नाते, करिकुलम डेवलपर होने के नाते हमारा रोल क्या है? इंटीग्रेट स्किल्स अक्रॉस सब्जेक्ट्स. करिकुलम डेवलपर भी जब अगर टेक्स्ट बुक्स लिखते हैं, करिकुलम लिखते हैं, यू नीड टू सी दैट ऐसे टास्क इंक्लूडेड है कि हर एक सब्जेक्ट में, न कि पूरा सब्जेक्ट सिखाने के बाद हम बैठे कि चलो बच्चों हम आज हम आपको सिखाएंगे कि कम्युनिकेट कैसे करना है, क्रिएटिविटी क्या होती है. इट विल नॉट इंटरनलाइज. जबकि हम सब्जेक्ट के दौरान ही अगर इंटीग्रेट करेंगे, बी टीचर्स और करिकुलम डेवलपर्स, वी नीड टू इंटीग्रेट स्किल्स. नेक्स्ट, बिल्ड इंटरडिसिप्लिनरी थीम्स. अभी एक ही स्कूल में अगर साइंस टीचर, मैथ्स टीचर, हिस्ट्री टीचर, ज्योग्राफी टीचर, कई बार ऐसे मिलके आप एक थीम बनाइए, लाइक से वीकली, नॉट नेसेसरी अक्रॉस द ईयर, बट साल में एक आध बार शायद एक वीक का एक हम फेस्टिवल करते हैं, जैसे कि एक थीम, फूड, या फिर फेस्टिवल्स, या फिर एनीथिंग एनीथिंग, ड्रेस. तो ऐसे थीम्स में यू कैन एक्चुअली build in these kind of things where you take geography, कहाँ से आ रहे हैं, किस geographical location से आ रहे हैं, इसका history क्या है, what is the evolution of these kind of things, where did it emanate from, how, what was the history of this, right? Mathematics में अगर food ले रहे हैं तो proportion, ratio proportion, right? कोई recipe बनाया, recipe में कितना क्या डाला, कितना डाला, what is the ratio, what is the proportion. Nutrition science में what are the kind of nutrition, how it becomes a balanced diet. So many things you can have interdisciplinary themes अगर teachers साथ में आए, subject teachers, and then you build a kind of plan accordingly. Even teaching, team teaching, co-teaching, it's not necessary about a weekly fest.
Just like that, you can pick up a particular topic from your subjects and come together and make a plan, interdisciplinary themes. So not only curriculum developers, teachers can actually do it by implementing it. Next. I see that many of you are doing it in your schools, and it's very heartening to see that. Yes. Encourage autonomy and innovation. Leaders क्या कर सकते हैं? अगर टीचर्स को ऑटोनॉमी नहीं देंगे तो इनोवेट नहीं कर पाएंगे. अगर मुझे फ्रीडम नहीं है कुछ करने की, देन आई विल गो बाय द रिजिड मेथड ऑफ टीचिंग, राइट? आई नीड फ्रीडम. So that needs to be autonomy, only then innovation can come. Next. Celebrate process, not just product. ये टीचर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है. स्टूडेंट्स जब कुछ करते हैं, उनके एफर्ट्स को आप सराहना कीजिए, अप्रिशिएट देम. कई बार कुछ गलत हो गया, डिजाइन करने बैठे तो कुछ सही नहीं आया, इट डिड नॉट अलाइन विथ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग और व्हाट द कॉन्सेप्ट वाज. इट्स ओके, एफर्ट्स तो किए. सो सेलिब्रेट द प्रोसेस, नॉट जस्ट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट किसी ने किया तो प्रोडक्ट को सराहना करते करते उन्होंने जो टाइम, जो एफर्ट्स उसमें डाले, जो थिंकिंग उसमें डाले, जो सब स्किल्स उन्होंने उपयोग किए, यू नो, ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू सेलिब्रेट. यस. नेक्स्ट. So even it applies for leaders, teachers के लिए भी you need to celebrate the process. Support risk taking. नए नए what do you say strategies को implement करने के लिए risk. See, if I do something, if I'm going to be wrong, if it does not work, I'm scared. अगर मुझे ऑटोनॉमी नहीं है, अगर मुझे मेरे प्रिंसिपल मुझे डांटेंगे कि नहीं ये पूरा वेस्ट किया आपने पीरियड. सो सपोर्ट रिस्क टेकिंग इवन फॉर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स ने कुछ किया, स्टूडेंट्स कुछ नया करना चाहते हैं, तो अलाउ देम टू डू इट. ओनली देन दे विल लर्न आउट ऑफ इट. लेट इट बी, इट मे बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस. कुछ मिस्टेक हुआ, इट्स फाइन, बट लेट देम टेक रिस्क्स. नेक्स्ट. एंड अलाइन इवेल्युएशन विद 20. सिर्फ पढ़ाने से नहीं, पढ़ाने के टाइम आप टास्क देते हैं, आप कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, ग्रुप प्रोजेक्ट, एवरीथिंग यू गिव, okay, asking them to create. But what about evaluation? Finally you give a paper pencil test जिसमें मार्क्स आते हैं, राइट? जैसे क्वेश्चन आंसर जिसमें व्हाट क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं. गिव देम सम सिनेरियोस, give them some kind of examples from their real life. Let them give some application of their concept. So ऐसे इवेल्युएशन करने से आपको 21st सेंचुरी स्किल्स असेसमेंट में भी दिखते हैं. अदरवाइज इट्स जस्ट अबाउट टीचिंग एंड देन इट्स जस्ट गॉन, डिसॉल्व्ड इन द क्लासरूम. अलाइन इवेल्युएशन विद द 21st सेंचुरी स्किल्स. तो पेपर पेंसिल टेस्ट 10th के लिए जरूरी है. वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर बोर्ड एग्जाम. जो मार्क्स होते हैं 99%, 200%, 150%, all that said and done, as educators, we need to do this at every class that we do. Then automatically they will be prepared for the board exam. Next. Now teachers. Teachers डरते हैं कि कुछ करूंगी या करूंगा तो चलेगा कि नहीं, नया कैसे ट्राई करूं, मेरा क्लास मिस हो जाएगा, सिलेबस कैसे कंप्लीट होंगे. छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, जरूरी नहीं बहुत लंबा लीप लेने की जरूरत नहीं है. स्टार्ट स्मॉल, ट्राई वन स्ट्रेटेजी ए वीक. क्वेश्चनिंग और रिस्क टेकिंग का एक कल्चर बनाया है क्लासरूम में. हर कोई क्वेश्चन करे, क्वेश्चन को कभी स्टॉप मत कीजिए. if you give them the freedom, students, they will start questioning, and from that questions we all will learn together. और अपने आप भी मॉडल कीजिए. यू हैव टू मॉडल दिस स्किल्स कि आप अगर कुछ गलत कर बैठे तो explicitly tell the students, oh, this failed, this did not work, now let me figure out why it did not work. If you start reflecting, students will start reflecting कि वो समझते हैं कि नहीं, टीचर अगर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हमें भी वो फ्रीडम है. Right? So you need to model these skills when you are communicating, when you are collaborating, how you are communicating. They observe, they imitate. Next. So it is not, it's a mindset, right? So as Alvin Toffler has said, illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. बहुत आगे आ चुके हैं हम, काफी कुछ पढ़ चुके हैं, काफी कुछ अंदर दिमाग में जा चुका है. नाउ हाउ डू वी अनलर्न इट, हाउ डू वी रीलर्न इट? सो इट्स नॉट अ सब्जेक्ट. ये 21st सेंचुरी स्किल्स, लाइफ स्किल एक सब्जेक्ट नहीं है कि अलग से आपने एक सब्जेक्ट पीरियड दे दिया, सैटरडे को लिया. नो,
it is something to be integrated into the curriculum, and it is a mindset. हमारे mindset को उस तरह से हमें दौड़ाना है. So next. So we are not preparing students. Next, please. We are preparing our students and ourselves not to survive, but to thrive in a world that is constantly changing. समय रोज बदलता जा रहा है. कल जो था वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा. हम उस कल के लिए उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं. So we need to be very careful what kind of skills, how do we model ourselves? We are role models, right? How do we model ourselves in front of our learners so that they learn these skills? How do we integrate and inculcate these skills within the school subjects by, while finishing the curriculum and while being with the flow and aligning with the core curriculum? And how do we create that kind of culture in our school, in our classroom of questioning, risk taking by giving autonomy and, allowing risk taking? So these are some of the skills that we have unpacked now. And I'm sure that from the responses, I see that many of you are actually implementing it and doing it. So it's just reviving those moments here. And thank you for sharing those small things. Yes. And thank you so much for patiently listening. Now I think the floor is yours. Thank you so much, ma'am. I think it was indeed a very, very engaging and informative session, especially the last slide where you have stressed that in today's world we have to unlearn and relearn, which is so essential, so essential. I think we kind of discover ourselves every day, and that's where we have to just leave behind whatever we had learned yesterday just to adjust ourselves to the world today. I think it was really great. We will now open the floor for questions. Gomti ma'am will be addressing all the academic questions, and I will take at the end all the admin and logistic questions, especially related to certificates that are coming. I will stay tuned. I will address that after we kind of complete the academic questions with Gomti ma'am's support. Sure. Most welcome to Yeah. share. Yeah. So, ma'am, Rupinder ma'am is asking us a question. How can 21st century skills be assessed and evaluated in the classroom? What are the benefits and challenges of using digital tools to teach 21st century skills? So, while obviously I'll open the floor for Gumti ma'am to respond on this, but this is to inform all the teachers that we are taking a special session on assessment and evaluation on the 4th day, and we will deep dive into how can we'll take case story after case story to understand that. But right now, Gomti ma'am, you can just address this question. Sure. Thanks, Debashri, for that. Yes, Miss Rupinder Kaur, absolutely. It is a challenge. It is not something that comes easy. And so nothing good comes easy. Assessment, in terms of assessment, everything is not tangible. When we start looking at numbers, numericals, that is where we are, having these kind of problems. We need to have rubrics. Any project, any group project, any kind of simple like podcast, as I said, traditional assessment replaced by podcast. Now, what are the things that you are going to assess? You need to have rubrics. The learner should know what is expected of him or her. You cannot just say that you give a topic and say you prepare a podcast, right? What is expected? Are you looking at the way it is recorded? Are you looking at the way technology is used? Or are you looking only at the content? See, there is a content which is the focus of your assessment. Other than the content, what are the things? Now, if the child has interviewed, what are the interview skills? Let the child, you may have certain questions, you may have rubrics, you may have presentations. The presentations are also assessed based on rubrics. So you also know what you're going to assess. The learner also knows what is expected of the learner. That is how assessment goes. So evaluation and assessment planning is very rigorous. It is not just by giving away the assignment, but it is about how you are assessing, what is the process. As I said, the product is important.
but equally the process is important. So even in the classroom, when you're assessing, say, a group project, the teacher cannot sit at one place and, just rest while the students are working. Even today, when we give projects, even in the classroom, we move around and see who is sitting quiet, who is dominating, who is leading, who is taking the initiative, who is helping others, giving opportunities. So all these things, when you try to capture of your learner, you know who is your learner. You know your learner well. And that is where you try to, you know, uh, personalize the kind of skills for that learner who needs it most. You know that this particular learner is always silent. How do you tap? One of them is dominant. How do you make that learner listen to other person? Right? So you need to know your learners for that. And of course, benefits and challenges. Yes, there are benefits and there are challenges of using technology. As we know, every day, see, just when I started the session, I got dropped out and I got little panicky. My heart just, I said, I just got dropped out. And then immediately I joined with my hotspot. I didn't know whether it was my network or the any other network. So these are challenges and we need to be able to cope with these challenges. So resilience is very important. Challenges come every day, every moment, but how to make our learners, individuals resilient and help them cope with these challenges is very important. One should not get anxious, go into kind of depression. So these are the kind of things that we need to deal with in everyday life. Yeah, that makes so much sense, ma'am. I'll move to the other questions. One teacher has asked that how can we encourage children to do open-ended questions, or ask open-ended questions? First thing is, we as educators, do we ask open-ended questions? At times, it's not just addressing you in general. I'm a teacher educator, okay, and as a teacher educator, I train teachers, so you know what it is, the B.Ed, the M.Ed. I have seen teachers with completely lack of content. It's not just pedagogy, lack of content. And the moment they lack content, what happens is questioning stops. Because if I question, I'm afraid that there will be counter question from the learner. Will I be able to respond to that question? So content must be really strong. Okay, now content is strong. When you ask open-ended questions, are you allowing the learner to respond even wrong? Are you supporting that kind of environment and culture in the classroom? And how are you supporting it? What is the kind of feedback that you give? It's not just wrong. What is the kind of feedback? Are you giving rational feedback or are you just being judgmental? Right? Why it is wrong? Where that person went wrong? Where that person actually has not got the concept, where the learner has lost that link with the concept. That you need to identify. The moment we do with the children, and then now let them prepare questions. They will come up more than us. More than educators, I have seen students coming up with wonderful questions that we can't think of. Where we stop, they start because they're very creative, right? So allow them to prepare questions. The moment you start, allow them to make questions, they will come with open-ended questions. So now you can have a formative assessment in the classroom. Make groups, let it be a quiz. Let them, you have points or some kind of stars. So let them throw questions to each other and make it as a healthy competition. Right in the beginning, you need to have rules and instructions as to what will be the Cora, decorum of the classroom, where there is a debate or a quiz. No shouting, listening to others, be patient, wait for your turn. All these instructions, make with the consensus of students, put it on the board. Then they will not deviate from this. And now the floor will be a conducive classroom where students come up with open-ended questions and students, their own peers respond to these questions. And then you are a facilitator, of course, mentor, facilitator, and a guide. Sure. Ma'am, we'll quickly move to the other questions. Teacher Raj or educator Raj is asking, with the attention span of children going down due to digital exposure, what can a teacher do to make classes worthwhile?
Well, Raj sir, it's not just children. I think yours and my attention span also has gone down. In this 1 hour, how many times did you feel like not listening? How many? At, at the frequency of how many minutes did you feel turning away from the screen or not listening? Or just hearing and not listening? Hearing is one, listening is one. So then, how do you make your class interesting? How do you bring in variety? How do you be responsive to your learner? What is the learner need? See, different learners come from different demography, different cultures, different styles. So are you catering? That is why UDL is very important. I brought UDL for that very matter that multiple modes of representation, multiple modes of engagement, multiple modes of expression will help you. See, we cannot achieve 100%. That's an ideal. But we always approach towards 100%. So in a class of 50, are you able to tap at least 40? There will always be a 10 or 5, which you will have to attend to separately sometimes. But we try to reach to 50. Only then you will reach till 40, 45. Right? And all these ways of teaching, the pedagogy, attention span, yes, definitely. In between, get some jokes. Why not? Teacher cannot joke. See, it's always that professional identity sometimes deters us from making the class more lighter. Let there be a joke. Let them get, even for your information, I take trainings as she had introduced. I take trainings for HMs who are 60, 58, government school HMs from Madhya Pradesh, Odisha, Telangana, right? You know what do I do? I make them shake, I make them run, I make them walk in the class. They are most people who, lose their attention. So then children enjoy all these things. You have icebreakers. There is no harm in bringing icebreakers between your lessons. Attention span is going to deteriorate day by day. But it is how, as a teacher, how do you make the classroom light? How do you make it fun? Joy of learning. How you bring the joy of learning? Then you can make your class worthwhile. And don't worry that if one of your classes is not worthwhile. If one of your classes is chaotic and messy, children are not listening, it's fine. You don't have to hang yourself with a noose. It happens. You learn from that. What happened today? Reflect. What happened today and what could I have done to make it a little better? And then you can revise your strategies next time. These are a few strategies that we can try. See, it's all in trial and error. Because what works with one class may not work with the other class. What works 1 year may not work the next year. So you need Right. to have a pool of strategies yourself. Right, and I'm sure we have many while you were, discussing. A lot of teachers were posting all the activities that they do. I So I'm could sure have as a look. Yeah. teachers, we are putting our 100 and 10% on in the classroom. So I'll come with another question by teacher Yasmin Jamil. She's a librarian and she introduces new things, but she doesn't get the support from the principal and staff. So that disappoints her. Do you have like Absolutely. some suggestions and some yay for I, her? I very well agree with that fact, Yasmin ma'am. It's not just you. There are many such institutions where leaders are not supportive. Sometimes teachers are resistant. Well, you need to bring something before introducing new things. What is it that you're going to? If you are having a forum or if you're having a meeting, can you introduce something that makes them look at first things? See, introducing new things all of a sudden, it's going to be resistant. Change is always, it faces resistance. People always resist to change because it's out of your comfort zone, right? You need to bring in such ideas where you comparison of a school where something is happening, some researches that have been happening, right? I'm just giving you a few suggestive ideas. It may or may not work. It cannot, it's not a quick fix solution. But before even introducing something, you need to set a platform.
break the context. The context is something which is crystallized, right? And there may be some staff who are your friends who agree with you. First, make a team. See, we talk of committees, but what about informal teams? Communities. These are communities. These are communities of practice, professional learning communities you can build. And then slowly, try to take one. We do it, right? In regular, in normal life, when we have friends, we do that, right? जब schools में भी किसी को अपने ग्रुप में लाना है तो कैसे, किसी को पटाना है, किसी दोस्त के थ्रू करना है, all these things we have seen, we have done. So that's why I said these are not radical skills, new skills. These are some things, competencies that we have been seeing and doing long back. Only it's a modern twist that we are looking at. So try all these kind of techniques and tactics. Sometimes only sitting with the principal, talk something that may trigger some thoughts of this. Don't introduce new things immediately. That is the shock. The shock people cannot take. Right? So maybe these are some kind of strategies that you can try. Yeah. With this, I'll take one last question. I'm sure all of you are waiting for, ma'am's response on your questions. But one last question that stood little different from the questions that we have seen before is a question by Jagdeep Singh. He's written in Hindi, Mohodaya. वर्तमान पद्धति में देखा जा रहा है कि हमें बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर रहे उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए, पर इसमें कहीं बच्चों को ये संदेश नहीं जाएगा कि उसकी गलतियों पर पर्दा डाला जा रहा है। लाइफ स्किल के साथ विद्यार्थियों को बेसिक्स कैसे सुधारे, मार्गदर्शन पर कृतार्थ करे। एब्सोल्युटली। बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करना बहुत गलत बात है। ये तो उल्टा आप उनको गलत रास्ते पे ले गया। जैसे मैंने कहा कि बच्चों को फ्रीडम दीजिए जवाब देने का, आप कोई भी प्रश्न देने का, और अगर सही गलत है, गलत तो हम भी कई दे देना, कई बार हमको सब कुछ नहीं आता ना, हम भी गलती करते हैं, फिर जाके चेक करते हैं, सुधारते हैं। तो लेकिन बच्चे एकदम कोमल होते हैं, राइट? उनका जल्दी व्हाट यू से, दे आर मैलिबल आल्सो एंड दे गेट अफेक्टेड आल्सो इजीली। तो इसके लिए आप, अगर कोई बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसके सबसे पहले तो सबके सामने उसको ये करना नहीं है। इन फ्रंट ऑफ ऑल अगर आप उनकी गलती को ये करोगे, तब उनको ऐसा लगता है कि मुझे सर या मैडम कुछ कह रहे हैं, मुझे लेबल कर रहे हैं। दैट अफेक्ट्स देयर आइडेंटिटी ऑल्सो, कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गलत हूँ, राइट? तो अगर ऐसी कोई गलती है जो सबके सामने नहीं किया जा सकता, उससे अलग से अकेले में बात करके वगैरह करना चाहिए। और अगर कॉन्सेप्ट के बारे में गलती है, कि ये आपको जानना जरूरी है कि कहाँ पे अटक रहा है बच्चा, कौन से बेस। सी देयर आर लेवल्स, है ना? यहाँ एक हद तक पहुंचने के लिए कई और ये पार करना है। तो कौन से यहाँ पे अटक रहा है बच्चा, कि कौन से यहाँ पे उसकी समझ थोड़ा वीक है, उसको जानना जरूरी है। और उसको बताना जरूरी है कि देखो यहाँ पे आप गलत हो रहे हो, इसकी वजह से आपको, जैसे हम स्टेप्स करते हैं मैथमेटिक्स में, स्टेप्स क्यों करते हैं, पता चलते हैं कि कौन से यहाँ पे बच्चे को एक्चुअली दिक्कत है। तो ये गलतियां को नजरअंदाज नहीं करना है, बट विथ जस्टिफिकेशन, विथ रैशनलाइजेशन। सिर्फ गलत है बोल के आपने छोड़ दिया तो फिर, या फिर चलो ये गलत है छोड़ दो इसे, तो फिर आप उसे और गलत है तो गलत है, और क्यों गलत है, कहाँ पे गलती है, किस तरह से सुधारा जा सकता है, अगर ये सब साथ में जाए, ये फीडबैक मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ फीडबैक इंपॉर्टेंट नहीं है, गुड बैड एक्सेलेंट तो हम दे देते हैं, लेकिन क्यों एक्सेलेंट है, तो क्यों, क्या ऐसा है जो दूसरे बच्चे उससे व्हाट इज से एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइट? ये फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स है ना, एक घंटे का सेशन बहुत छोटा है, इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। लिटरेचर में देखे तो इतने सारे जुड़े हुए हैं, कम पड़ेंगे, हमारे जीवन कम पड़ेगा इसको ये करने के लिए।